We have our own concern. We are also the citizen of this country. मुसलमान भी इस मुल्क को के वफादार हैं, इस मुल्क को चाहते हैं. सिर्फ किसी एक मखसूस सियासी जमात का ठेका नहीं है कि वही इस मुल्क के वफादार हैं. इस मुल्क के वफादार हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, और इस मुल्क में जो अल्लाह, भगवान या फिर गॉड को नहीं मानते वो भी इस मुल्क के हिस्सा है. डाइवर्सिटी है इस मुल्क में, कल्चर्स है, जबान है, हर कोई है. लेकिन सिर्फ एक आदमी ठेकेदार बनकर इस मुल्क की ठेकेदारी और इस मुल्क की वफादारी का सर्टिफिकेट देने का हक व इख्तियार नहीं रखता. तो मैं सर आपके जरिए इस बिल के जरिए ये अपॉर्चुनिटी को लेते हुए ये कहना चाह रहा हूं सर कि सेकेंड फेज में एसआईआर हो रहा है. अब फाइनल थर्ड फेज में एसआईआर तेलंगाना में भी होगा. तो मैं इसके साथ साथ ये भी कहूंगा सर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हर्ड द पिटिशन challenging the SIR process, issuing direction to ease the workload of booth level officers, while also noting that Aadhaar cannot be accepted as conclusive proof of citizen during verification. Sir, the debate surrounding the SIR is ongoing and highly sensitive, reflecting broader discussion in India about citizenship law, minority rights and the political landscape, sir. And it is so sad, sir, in many states, sir, ये SIR में there are Aadhaar card, passport, birth certificates and all. I mean, an individual who is 40 years old is supposed to have a birth certificate. In many states, sir, the state governments have issued an order of not issuing the birth certificates. If the birth certificates are not issued, how will they establish? सर आज से कई जमाना पहले गांव में बर्थ होते थे और वहां पे कोई बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं रहते थे. देयर आर मेनी अदर इश्यूज सर, एंड द कांग्रेस एंड द लीडर ऑफ कांग्रेस राहुल गांधी साहब एंड ऑल द अपोजिशन लीडर्स एंड लीडर्स फ्रॉम ऑल अपोजिशन पार्टीज हैव रेज्ड देयर कंसर्न रिगार्डिंग दिस एसआईआर. सर, दिस एसआईआर इज नथिंग but an indirect way of CAA and NRC. And so sir, I taking this opportunity sir, when a special intensive revision exercise is taken up, the government is also to call all the political parties have to ensure that the names of all eligible voters are included, and there is no wholesale deletion of names of eligible voters as it has happened in Bihar, or it is happening in state where SIR phase 2 exercise is taken up. Through you, sir, I would request the government to convey an all-party meeting on SIR issue, sir. Since the election, Chief Electoral Office of Telangana has initiated the steps for implementation of SIR in the state, sir. Sir, it is not that we are against this intensive revision happening, sir, but it should happen. I do not understand why my learned friends have to agitate in this. Sir, when I say that जो भी इस मुल्क का शहरी है और एलिजिबल है वोट करने के लिए, उसके वोट के हक को छीना नहीं जाना चाहिए. यही हमारा मुतालिबा है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी को, एक बांग्लादेशी को आप लाकर उसको वोट देने का हक दे दें. सर, this is all wrong. When Bihar में sir this SIR had happened, not a single Muslim name or in Bihar was found to be from Bangladesh or from Pakistan or elsewhere, sir. ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, नफरत फैलाने का. हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान. कोई भी एक ठेकेदार नहीं है इस मुल्क का कि वो कह दे कि हम इस मुल्क के हैं, दूसरे इस मुल्क के नहीं है. ये मुल्क सबका है. ये मुल्क हिंदू का है, ये मुल्क मुसलमान का है, ये मुल्क ईसाई का है, ये मुल्क पारसी का है, ये मुल्क गॉड, अल्लाह, भगवान को नहीं मानने वाले का भी है. ये मुल्क हर किसी का है. कोई एक ठेकेदार नहीं है इस मुल्क का. ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है कि वो अपनी जागीर को चलाते रहे, जैसा चाहे बोलते रहे. हम मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा थे, है और रहेंगे. हम इस मुल्क में वफादारी के साथ खड़े थे, है और रहेंगे. तो मैं आपके जरिए हुकूमत से फिर से मुतालबा करूंगा
کہ SIR آنے والا ہے, SIR کے لیے جو بھی ضروری انتظامات کرنا ہے کریے, اور میک شور کریے کہ کوئی بھی ایلیجیبل ووٹر کا ووٹنگ رائٹ اس سے نہ چھینا جائے. سر, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپارچونٹی. سر.